Assalamu alaikum class. Today our topic is decimals and percentages. We can convert decimal numbers into percentages and numbers into a decimal number. Question number 11. Change these into percentages. Part A 6. If we multiply a whole number by 100 and then divide it to a number by 100, so the number convert into a fraction number, then we convert into a percentage number. 6 by 100 equals to 600 and divided by a number 100 in the denominator. 600 by 100 means 600 and 1 by 100 means percent sign. 600%. This is also equals to 600% is our answer. Part B is 17. 17. If we multiply and divide a number 17 by a number 100, then we can convert this whole number into a fraction number. 17 by 100 equals to 1700 divided by 100. If any number is divided by 100, then it can convert into a percentage number. 1700 divided by 100 means 1700%. Part C is 58. Again we can divide and multiply this by a number 100. This can convert it in fraction number, and this 5800 divided by 100 means 5800%. Question number 12. Change these into percentages. Part A is 0.23. In this part we have to convert this decimal number into a percentage. Again we multiply this decimal number and multiply and divide this decimal number by a number 100. If we multiply this decimal number by a number 100, so two decimal places move from right side to the left side of that number, and this becomes a whole number 23 and the in numerator and 100 in the denominator. 23 by 100, as you know, equals to 23%. Again we multiply the part B by 100 and divide it again with the number 100. If we multiply this number by 100, two decimal places from the right side move to the left side. 73.9.4 in the denominator and 100 in the numerator and 100 in the denominator. 73.9.4% is answer. Part C is 7.10. We again multiply and divide by this decimal number by 100. 7.01 by, if we multiply this number by 100, so both decimal places from the right side move to the left side. 701 by 100. 701 by 100 means 701%, because 1 by 100 equals to percent. Question number 13. Change these percentages into fractions, mixed fractions or whole numbers, reducing where you can. We can convert these percentages in percentage number, in a whole number, or mixed number or fraction. 75 by 100. 75%, as you know, means 75 means 75 in the numerator, percentage means 100 in the denominator. This equals to 75 by 100. Part B is 300%. 300% means 300 in the numerator and percentage means 100 in the denominator. As you know, 100 by 300, if we divide these numbers we get the answer 3, and 3 is our answer. C is 21%. 21% means 20 in the numerator and 100 in the denominator. Part D is 38%. 38% means 38 in the numerator and 100 in the denominator. Question number 14 is change these percentages into decimal numbers. We convert these percentages into decimal numbers by converting into a fraction. If we convert this into a fraction, this equals to 35 by 100. 35 by 100, if we divide any numerator by a number 100, so you have to place two digits after the point, and you have to write from the left side
you have to write the numerator from the left side. First of all you write 5 and then you have to write 3 in the first decimal place. 0.35 is answer. Next is 1.8%. 1.8 in numerator, 100 in the denominator. This is fraction, and then we convert into a decimal number. 100 means you have to place 2 digits after the point. When you have to place 2 digits after the point, both 1 and 8 moves to the right of that point, means 0.1 and 8. 0.18. You have to correct it, not write 0. Part C is 98%. 98% means 98 by 100. This also equals to 0.98, means when you divide a number by 100 you have to place two decimal places after that point, and you have to write the numerator from the left sides. First you write 8 and then you write 9 in the first decimal place, 0.92. Part D is 140%. 140% means 140 in the numerator, 100 in the denominator. If we divide a number, any numerator by a number 100, so you have to place 2 digits after that decimal point, and the numerator, and you have to write the numerator from that left. First you write 0 in the second decimal place and 4 in the first decimal place, and 1 is your whole part. 1 is written in your whole part. 1.40% is answer. Question number 15. Change these decimal number into percentages. Part A is 0.39. If we multiply and divide this decimal number by a number 100, so this can convert into a fraction number, then we convert into a percentage number. 0.39. If we multiply 0.39 by a number 100, so this 39 moves to the left of that point, and it's become a whole number, 39. 39 divided by 100 means 39%. 0.6 again multiply and divide it by 100 number. 0.66 moves to left of that point, and one space that is left we should add 0 in that space. 60 in numerator and 100 in denominator. This equals to 60, and 1 by 100 equals to percent. 60% is your answer. Part C is 0.04. We multiply and divide it by 100, and 0.04 becomes 4 because you have these two, 0 and 4, moves to right of that number, and when it becomes a whole number you don't need to put 0 first of that number. 4 by 100, this becomes 4 by 100. 4 by 100, you also know 4 by 100 equals to 4%, because 1 by 100 equals to percent. Question number 16. Copy and complete the table. First we have write fraction with denominator 100. As you know, fraction with denominator 100, 10% means 10 by 100, 1% means 1 by 100, 17% means 75 by 100. Decimals 0.50 or 0.5. 10 by 100 equals to 0.10 because two numbers in the numerator moves to right side. 1 by 100 means 0.01 because that only one number moves to right side, and the space that is left we add 0 in that space. 75 by 100 means 0.75. Fraction in lowest terms. 1 by 50 by 100, if we cut these by a number 2 we get 1 by 2. 10 by 100, if we cut these numbers by a number 10 we get 1 by 10. 1 by 100 is the same as 1 by 100. 75 by 100, if we cut this number by a number 5 we get 3 by 4. Word problems. Question number 1 है, इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर द फॉलोइंग आइटम्स. इसमें आपने चेक करना है कि एक प्राइस है जो कि हमें पहले दी गई है, और एक प्राइस है जो कि हमें डिस्काउंट के बाद दी गई है. हमने चेक करना है कि हमें डिस्काउंट देने के बाद हमारी प्राइजेस क्या बनती हैं.
पहली प्राइस है थर्मस फ्लास्क की पहली प्राइस है 80 और उन्होंने उस पर 10% डिस्काउंट दिया। तो आपने इसको कैसे चेक करना है, 80 में से आपने डिवाइड करना है 80/10 मींस 80 में से 10% डिस्काउंट देने के बाद उसकी थर्मस फ्लास्क की प्राइस क्या बनती है, 80 माइनस 80/10 दिस इक्वल्स टू 8, 80 minus 8 is equal to 72. After 10% off, the price becomes 72. Part B is the plastic bucket. प्लास्टिक बकेट की पहली प्राइस थी 65, उन्होंने इस पर 20% ऑफ डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट देने के लिए हम इसको कैसे चेक करेंगे, 75 में से 65/20 करेंगे, मींस कि अपनी रियल प्राइस में से डिस्काउंट वाली प्राइस को माइनस करेंगे। रियल प्राइस है 65, डिस्काउंट प्राइस है 65/20, क्योंकि हम परसेंटेज इसकी निकाल रहे हैं। 65 माइनस 32 जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.25, इसको जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 61.75। 20% ऑफ पे हमारी प्राइजेस कितनी कम हो गई हैं, 61.75। पार्ट सी है द क्लिक इट कैमरा की प्राइस थी 800, 15% उन्होंने ऑफ दिया। हम 800 वाली प्राइस में से 15% ऑफ वाली प्राइस को माइनस करेंगे। 800 माइनस 800/15 दिस इक्वल्स टू 53.33। आफ्टर subtracting the two numbers we get 746.67। तो प्राइसेस आपने देखा होगा कि कितनी कम हो गई हैं, डिस्काउंट 15% ऑफ डिस्काउंट के बाद 746.67। अब टूथपेस्ट की प्राइस उन्होंने 12.50 थी, लेकिन 5% उस प्राइस पे ऑफ दे दिया। हम अगेन उसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हमारी प्राइसेस क्या हो जाएंगी, 10। तो पहले हमारी प्राइसेस है 12.50, जब हमें 5% उस पर डिस्काउंट मिला, ऑफ मिला, तो हमारी प्राइसेस हो गई 10। क्वेश्चन नंबर 2 है मिसेस शाह अर्न्स ₹8,500 एवरी मंथ। वो इतने पैसे उनकी सैलरी है। ही वर्क एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। मिसेस शाह के पास इतनी सैलरी है और इतनी सैलरी में से उनको बॉस ने एक बोनस दिया है, इंक्रीज़ की है उनकी सैलरी 10%। एवरी मंथ उनकी सैलरी कितनी है, 8500, और इंक्रीज़ उनका कितना है, 10%। और जब आपका किसी भी चीज़ में इंक्रीज़ आएगा परसेंटेज में, तो आपने उसमें से उस चीज़ को डिडक्ट नहीं करना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, आपने उसमें उस चीज़ को ऐड करना है, मींस आपने उसमें उस चीज़ को प्लस करना है। तो हमारी टोटल सैलरी कितनी होगी, जितनी सैलरी हमें पहले मिल रही थी, मिसेस शाह को पहली सैलरी जो मिल रही थी, और उसमें उतनी सैलरी को हम प्लस और करेंगे जितने परसेंट उनका इंक्रीज़ आया है। 8500 में हम 8500/10 का 10% मीन्स 10% का इंक्रीज़ करेंगे। 8500 प्लस जब हम इनको डिवाइड करेंगे 850 आएगा। 8500 प्लस 850 9350। उनकी सैलरी 8500 से कितनी इंक्रीज़ हो गई, 9350। क्वेश्चन नंबर 3 है मिस्टर मंसूर अर्न्स अ सम ऑफ ₹35,000 पर मंथ, और उन्होंने उस सैलरी में से कितना स्पेंड कर दिया, 75%। अपनी सैलरी में से 75% हम निकाल देंगे टोटल सैलरी में से, क्योंकि उन्होंने स्पेंड किया, मींस उन्होंने इन इतने पैसों को यूज़ कर लिया। 35,000 में से जब हम 35,000 का 75% माइनस करेंगे तो हमारी सैलरी कितनी रह जाएगी, 34,953.4। तो अब उनकी खर्च करने के बाद 75% सैलरी कितनी रह गई है, 34,953.4। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।